Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So, first of all, starting today's session of chapter number 5 Advanced Features of Excel, I want to wish you all happy Eid Mubarak to you and your family members. Okay, so welcome back after mini vacation. Okay, so let's start our chapter number 5 Advanced Features of Excel, and here is a part 2 of this lesson. Okay, so let's start our today's session. Okay, so last video of the starting of this chapter, I explain you about what is chart and what are the components of a chart. Okay, first of all, I show you that what is a chart. It means the meaning of the chart and the components of a chart. Now today I'm going to explain you about commonly used chart type. Okay, so this is not a practical part or session. This is only theory session. Okay, so you just have to concentrate on this screen whatever I am showing you. Clear everyone? So let's begin with commonly used chart type. Different types of charts are available in Excel as per your need, as per your data. Okay, so some of the most commonly used charts means most commonly used chart which are used at a school, at business purpose, at a bank, of offices, everywhere. That commonly used chart types we have to learn in this session. So let's begin. Okay, so now concentrate here. There are 4 types of chart. Right now we have to learn about 4 types of chart. First is column chart. Second is bar chart. Okay everyone, column chart and bar chart. Clear? So first of all, I want to say something about column chart. Okay, you can see here on the screen that there is a chart figure also giving to you and the description also giving to you, right? So first of all, on the left hand side you can see that there is a data series. I told you, मैंने आपको बोला था that जो हमें डेटास की वैल्यूज, नंबर्स या मार्क्स व्हाटएवर जो भी दिखा शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा सीरीज. ओके, सो यू कैन सी द डेटा सीरीज इन अ कॉलम मैनर. कॉलम मैनर आपको दिख रहा है, कॉलम्स मैनर में है, राइट? तो इसलिए इस टाइप के चार्ट को हम बोलेंगे कॉलम चार्ट, विच इज यूज फॉर ऑलमोस्ट एवरी पर्पस. Each and every purpose, almost this column chart is used. Clear everyone? So I'm going to explain you about column chart. That a column chart is a commonly used chart type. जैसे अभी मैंने आपको बोला that column chart is commonly used means most of जो भी अगर आप chart create करता है for any purpose, वो सिर्फ और सिर्फ कॉलम चार्ट ही यूज करता है मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, एज रेयर पर्पस, रेयर सिचुएशन दे आर यूज, अदर पीपल्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट. समझ में आया? सो अ कॉलम चार्ट is a commonly used chart type to display data in the form of vertical bar. Okay, you can see this data series. It is vertical or horizontal? Yes, it is vertical. Okay, it is used to show changes in data over a period of time or the comparisons among different data item. Means जो भी आप डेटाज यूज करते हो टेबल में उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन शो करना है या तो फिर चेंजेस शो करना है. एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज कॉलम चार्ट. In a column chart, categories are organized along the horizontal axis. Okay, category axis कहाँ पे होता है? Do you remember that components of chart? Category axis कहाँ होता है? Horizontally, right? जिसको हम x axis भी बोलते हैं. Okay, and value axis कहाँ डिस्प्ले किया जाता है? On a y axis. So category axis means
कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब कैटेगरी हॉरिजॉन्टली होता है एंड वैल्यू एक्सिस इज ऑन अ वर्टिकल बार. ठीक है, ये कॉलम चार्ट का डिस्क्रिप्शन है. मीन्स दैट इन अ कॉलम चार्ट कैटेगरी एक्सिस इज ऑन हॉरिजॉन्टल, कैटेगरी एक्सिस इज एज अ हॉरिजॉन्टल वे एंड वैल्यू एक्सिस डिस्प्लेड ऑन अ y axis or vertical way. ठीक है, understood? So this is column chart. Okay, now let's come on bar chart. What is a bar chart? First of all, see, there is a data series. How you can see the data series here? Horizontal or vertical? It is horizontal. Understood? So difference between column and bar chart is what? First difference, that column chart displayed vertically and bar chart displayed horizontally. Clear everyone? So this chart display data in the form of long rectangular rows. You can see here long rectangular rows. Okay, it's not a column type, it's a road here. Okay, also called बार्स, इसको हम बार्स भी बोल सकते हैं. दैट आर प्लेस्ड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ऑन द चार्ट एरिया. इट इज नॉट फिक्स दैट बार चार्ट इज only is horizontally. It may be vertically or horizontally. Clear? In a chart area. Chart area मतलब जहाँ पे चार्ट डिस्प्ले होता है, that one. So, a bar chart illustrates comparisons amongst the individual item. Okay, between the different items. It is displayed on individual items. So, second difference is here that column chart display the comparison among different items. Whereas bar chart illustrate comparisons amongst the individual items. समझ में आया? मतलब क्या है कि कॉलम चार्ट डिफरेंट आइटम के बीच में कंपैरिजन शो करता है, बट बार चार्ट शो द कंपैरिजन अमोंग, मतलब कंपैरिजन इंडिविजुअल आइटम के डिस्प्ले होता है. ठीक है ना. In this type of chart, categories are represented on the vertical axis. You can see, obviously, जब चार्ट ही हॉरिजॉन्टल होगा तो उसका एक्स एक्सिस मीन्स कैटेगरी एक्सिस कहाँ पे होगा? वर्टिकली. समझ में आया? यहाँ पे अगर हम जैसे आइटम के नेम लिखेंगे, सपोज दैट पर्सन्स नेम, स्टूडेंट्स के नेम, जैसे रिया, हियर रिया, सीमा, मीना, गीता. ओके, सो ये कहाँ पे डिस्प्ले हुआ? कैटेगरी नेम्स ऑन अ वाई एक्सिस. ओके, एंड ऑन द वर्टिकल and the values are represented on the horizontal axis. मतलब suppose that उस रियाज मार्क्स इज 75, तो 75 कहाँ पे लिखा होगा? यहाँ on a vertical bar, horizontal bar पे. ठीक है, so on a vertical bar category axis and a horizontal bar there is a y axis. So this is third difference, that in column chart x axis means category axis represented horizontally and y axis or value axis represented vertically, whereas in a bar chart category axis represented or x axis represented on a vertically and value axis or a y axis represented horizontally. Clear everyone? So you can understand about column chart and bar chart. Can we move on a third type of chart? Okay, so the third type of chart is line chart. You can see on the figure that whatever the numbers or value is displayed in the manner of line chart, this way. Okay, and that all numbers are connected with a line. Suppose for one value is 119, then 99, then 141, then 78, then 120 and 159. Afterward, that all points means values are connected with a line. So that's why we can call this chart as a line chart. Understood? This is a one value. You can see the blue line is for the
what we can say for the one item and this red line is for the second item. Clear everyone? So ऐसा आपने कहीं पे चार्ट देखा है? You can see this type of chart anywhere? Yes, in the match, cricket match, whenever there we want to show the score between two teams, at the time that they all are showing you as a line chart. Understood? वैसे ही लाइन चार्ट, दिस इज अ चार्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइन. ऑब्वियसली जैसे नाम वैसा उसका मतलब डेफिनेशन, दैट दिस इज अ चार्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइन. ओके, it is very similar to plotting a graph on a graph paper with its value on the x and the y axis. A line chart uses connecting dots to display trends in data over a period of time. You can see there that it line chart uses connecting dots. यहाँ पे दिख रहा है connecting dots आप लोगों को. So line chart display the connecting dots. Okay, to display the trend in data over a period of time. Trend means what? Changes. Okay, changes in the period of time. So that's why this line chart is used. Clear everyone? Now let's move on a fourth type of chart, which is pie chart. Okay, now pie chart is means what? Pie chart you can see on the first of all on the left hand side figure. It is like a circle. Okay, so obviously its definition is like this, that this chart display the data in the form of a circle. Obviously that makes up a data series to the sum of items. It always shows you only one data series. यहाँ पे सिर्फ वन डेटा सीरीज ही होगा, मीन्स मोर देन टू बार्स नहीं हो सकता है किसी भी आइटम का. ठीक है, यू कैन टेक ओनली वन डेटा सीरीज हियर, मीन्स वन ओनली, टू नॉट. जैसे कि हम मार्कशीट में टूज लेते हैं ना, दैट रिया गेट 78 मार्क्स इन मैथ्स एंड 60 मार्क्स इन अ साइंस. तो कितनी डेटा सीरीज हुई वहाँ पे? 2 डेटा सीरीज. अंडरस्टूड? वैसे यहाँ पे हम डेटा सीरीज सिर्फ वन ही ले सकते हैं. क्लियर एवरीवन? सो it always shows only one data series. Okay, and is useful when you want to emphasize on a significant element. ये each and every chart we cannot take any directly. हम किसी भी चार्ट को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं. एज पर आवर डेटा, हमारा डेटा जो भी है उसके हिसाब से हमें चार्ट टाइप चूज करना है. अंडरस्टूड? जैसे कि मुझे शो करना है वाटर, अर्थ के कौन से पार्ट में कितना वाटर है. ओके, एट द टाइम आई कैन नॉट टेक अ कॉलम चार्ट. तब मुझे कौन सा चार्ट लेना पड़ेगा? पाई चार्ट. लाइन चार्ट सेम वे. लाइन चार्ट मुझे टू कंटिन्यूअसली चेंजेस किसी भी चीज़ में दिखाना है. ओके, जैसे कि ग्रोथ इन द कंपनी सेलिंग, तब हम कॉलम चार्ट या बार चार्ट यूज नहीं कर सकते हैं. वी मस्ट हैव टू टेक अ लाइन चार्ट. अंडरस्टूड? वैसे ही मार्कशीट है या परसेंटेज है किसी स्टूडेंट्स के, और द सेल्स है, anything we want to show, at that time we cannot show it as a column line chart or a pie chart. We must have to take column chart or bar chart. मतलब ऐसा नहीं, there are 4 types of chart like column chart, bar chart, line chart and pie chart. We can take any one. No, what our data is, according to that data we have to choose our chart type. Clear everyone? So here 4 types of chart I explain you. I hope you all get these 4 types of chart, and you will get it also that when we have to use which type of chart. Understood? So now to be continue in a next part for creating a chart. Next part में हम learn करेंगे how to creating a chart. But एक चीज़ याद रखना, creating chart in Excel. क्यों? Because
we can create chart in Microsoft Word also, we can create chart in Microsoft PowerPoint also, and we can create chart in Microsoft Excel also. Last year in 6th standard you learned how to create chart in PowerPoint, but इस बार आपको learn करना है how to create chart in Excel. So this time we have to open Microsoft Excel. Clear everyone? So here I'm going to wind up my speech and my lesson here. Next video, come together and learn how to create a chart. Till then, spread happiness and stay safe. Bye everyone.